Hello and welcome back to my channel. Let's excel to excel. So today we are here with another topic. The name of the topic is, as you can see, active and passive voice. All right. Now, before starting off with the topic, it's very important for us to understand what exactly is a voice. Voice kya hota hai? All right. Now, from the definition, you can see voice is what? Voice is a verb form which tells us whether the subject is acting or being acted upon. All right. Now, एक बार अगर ये definition पढ़ेंगे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है. But then when we highlight on certain words like जैसे verb form है, we have words like subject, acting or being acted upon, तो समझ में आता हो कि fine, it has something to do with the verb. All right. Now let's understand what exactly a voice is by looking at these two examples. All right. First example क्या है? I teach English. English is taught by me. Okay, we have two examples here. Now, एक बात बताओ that what is actually the difference between these two sentences? Is there any difference in these two sentences? I'm talking about the meaning. Meaning में कोई change है? First क्या sentence बताता है? That I teach English. मैं English पढ़ाती हूँ. Second sentence is English is taught by me. English मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है. So what are we seeing? We see that there is no change in meaning of the sentence. Meaning में कोई बदलाव नहीं है. Changes कहाँ कहाँ पे हो जा रहे हैं? There is a structural change. My structure is different. Excuse my handwriting. Alright? There is a change in structure. किस किस तरह के changes है? See here, I is converted to me. Teach, my main verb, is converted to taught. Alright, look at the position. English, which was working here as an object. क्या हो जा रहा है? Subject बन जा रहा है. Now let's get back to the definition. अब definition समझते हैं. Voice is a verb form. Voice क्या है? एक तरह का verb है जो क्या बता रहा है? What is this verb actually telling us? Whether the subject is acting. Subject act कर रहा है. Is the subject working here? Alright. Or is being acted upon. Now look at this example. I teach English. What is my subject here? We all know in this sentence, what is my subject? I is my subject here. Isn't it? I becomes my subject. Now, I teach English. I am doing something. So, from here we understand, okay, the subject is acting. The subject is working. Alright. Now, let's take up another. English is taught by me. So, I जो subject था, जो actively काम कर रहा था, उसने क्या कर लिया? अब एक back seat ले लिया. यहाँ पे importance और stress किस पर जा रहा है? We are stressing upon what? We are stressing upon the object. Okay, so here lies the difference. Voice क्या काम है? क्यों पढ़ाया जा रहा है? Because it is through the voice we understand whether the subject is doing the work or whether it is being acted upon. Okay, whether the subject has now taken the place of an object. Like here, I has taken the place of object me. We all know when we teach pronoun, जब हम लोग pronoun पढ़ते हैं, then वहाँ पर sorry, I is what? I is the subjective case, whereas me is used as the objective case. Alright, so if you want me to make a detailed video on pronouns, subjective and objective case and how to use them, please do let me know in the comment box. बट फिलहाल यहाँ पे बस इतना समझो कि वॉइस क्या होता है. वॉइस एक्चुअली टेल्स अस वेदर माई सब्जेक्ट इज एक्टिवली डूइंग समथिंग और वेदर इट हैज़ टेकन अ बैक पोजिशन. ऑलराइट, नाउ यहाँ पे ये भी सवाल आ सकता है कि मैम व्हाट इज़ इवन द नीड. ओके, क्या ज़रूरत है हम लोग सब्जेक्ट को बैक पोजिशन दे रहे, वो बैक सीट ले रहा है. ऑलराइट, passive voice, यहाँ पे when we'll talk about the types of voice, then you will see we have two types of voice. What are they? Active voice and passive voice. Okay, now active voice, from the name itself we understand here that the subject is actively doing something. The verb that shows the action is performed by the subject. See here, the action is performed by the subject. Subject is doing something. My mother cooks food. What is my subject here? My mother. Okay, now again सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया इन माई प्रीवियस वीडियो. सो इफ़ यू वॉन्ट टू रिकैपिचुलेट, kindly go to that video, subject and predicate. From there you will understand the concept of subject, how to identify subject, and then you can come back to this video if you are unable to understand what exactly subject is.
ऑलराइट, एंड फॉर दोज हु नो, उनके लिए ये है माई मदर. यहाँ पे वी नो माई मदर कुक्स फूड. वाई? बिकॉज सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट एक्टिवली परफॉर्म्स समथिंग. He did it. He is the subject here. Lata sings song. So what are we seeing here? That the subject is performing an action. Subject is actively doing something. Okay. Now talking about the sentence structure of active voice. See here. It starts with the subject. Then it has a verb and then object. My mother is the subject. Cooks is the verb. Food is the object. He is the subject. Did is the verb. It is the object. Lata is the subject, sings is the verb, songs is the object. So this is, like a basic sentence structure. I am not saying कि हर केस में यही होता है, but usually this is the sentence structure. Now coming to passive voice. Passive voice क्या बताता है? It shows what is done to the subject. यहाँ पे the subject is not actively doing anything. उसके ऊपर काम किया जा रहा है. वाई? बिकॉज वेन नाउ कम्स द केस की क्या ज़रूरत ही है पैसिव वॉइस की. तो कई बार ऐसे सिचुएशंस होते हैं व्हेन वी डोंट नो द सब्जेक्ट. ओके, सपोज है कि चोर पकड़ा गया. सी, द थीफ वाज कॉट. नाउ वी डोंट नो हु कॉट द थीफ. किसने पकड़ा चोर को वो नहीं पता है हमें. व्हेन द सब्जेक्ट इज अननोन देन वी यूज पैसिव वॉइस. और जबकि पता ही पुलिस ने पकड़ा होगा, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन है? चोर पकड़ा गया. सो व्हेन वी आर लेइंग स्ट्रेस ऑन द ऑब्जेक्ट rather than laying stress on the subject, then we use passive voice. Okay, see, food is cooked by my mother. So my first sentence was my mother cooks food. यहाँ पे I have reversed. Food is cooked. Why? Because I am laying stress on what? Laying stress on food. It was done by him. See, in my first sentence, he did it. But I have converted that to it was done by him. Songs are sung by Badshah. Badshah, जैसे उसमें लता sings song. Okay, but here, what am I doing? I am laying stress on songs. Songs are sung by Badshah. तो पैसिव वॉइस पे आपको क्या ध्यान में जा रहा है? क्योंकि सब्जेक्ट जो था, जो हमारे एक्टिव वॉइस पे सब्जेक्ट था, वो पीछे चला गया है. पैसिव वॉइस सब्जेक्ट आगे आ गया. Okay, now talking about the sentence structure, see here. Object. My mother, which was the subject in my previous sentence, has become the object. Now, यहाँ पे understand this, that is actually no longer an object. It is actually known as the subject of the passive voice. I'll write this down for you. Subject of the passive voice. All right. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बट ये आप समझोगे दैट इज इट इज एक्चुअली द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में ये एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है बिकॉज इसको स्ट्रेस दिया जा रहा है, इसको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है. दिस इज द सेंटर मोस्ट पॉइंट ऑफ द सेंटेंस. ओके, देन यू हैव हेल्पिंग वर्ब. सी हियर यू कैन सी इज है, वॉज है, आर है. लेट मी जस्ट क्लियर दिस आउट. हाँ, अब ये देखो, आप इज है, वॉज है, आर है, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. सो next it will have helping verb. Then you have the V3 verb. Cooked, done, sung. ये सब क्या हो जाते हैं? V3 verb. तो क्या देखा जा रहा है? V verb is converted to V3 verb. V1 verb is converted to V3 verb in case of present tense. आगे हम लोग टेंसेस के रूल्स पढ़ेंगे, देन वील अंडरस्टैंड. बट यहाँ पे बस इतना ध्यान में रखना है आपको कि सिंपल पास्ट टेंस नहीं यूज होगा while we convert the sentence into passive voice. Instead, what are we going to use? We are going to replace it with V3 form of verb. Alright, then by, ya, with, and then finally your subject. Now again, subject nahi hai ye object of the passive voice, which was actually the subject of the active voice. Alright, I hope yahan tak clear hai. Now let's move on. रूल्स फॉर कन्वर्जन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. क्या क्या रूल्स होते हैं? बस इतना ध्यान में रखना कि 5 रूल्स होते हैं, जिसमें से 3 रूल इंपॉर्टेंट है, 2 रूल है वो आपको यूज करना है डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस. सबसे पहला रूल, व्हाट इज द फर्स्ट रूल? चेंज इन पोजिशन. चेंज इन पोजिशन. ना ये क्या बात हुई? जैसे सपोज अब तक हम लोगों ने कितने सारे सेंटेंसेस में पढ़ा है, राम waters plants. राम है, पौधों को पानी देता है. ऑलराइट, व्हाट इज माय सब्जेक्ट हियर? राम इज माय सब्जेक्ट,
waters is the verb, the action performed by him, and plants is my object. While converting this to passive voice, अब जब इसको passive में convert करेंगे तो क्या हो जाएगा? We are going to use plants at the beginning. Plants. ठीक है? And राम को क्या कर देंगे हम लोग? पीछे की पोजीशन दे देंगे. नेक्स्ट रूल, टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड. नाउ ये आप ध्यान में रखोगे, यहाँ पे आगे हमने जो भी किया है, ओके, सी हियर, माई मदर कुक्स फूड, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया था? फूड इज कुक्ड बाई माई मदर. यहाँ पे अब ध्यान रखो, सी मैं कोशिश करती हूँ दोनों सेंटेंसेस को एक स्क्रीन पे, वो नहीं आ पा रहा है, नो प्रॉब्लम. यहाँ पे देखो, यू मे आस्क मैम कुक्ड है, डन है, ओके तो ये कंफ्यूज बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं कि अच्छा ये तो पैसिव पास्ट टेंस हो गया. नो, ये अभी भी प्रेजेंट टेंस है. और वो कौन बता रहा है कि अभी भी प्रेजेंट टेंस है? आवर यूजेज ऑफ द वर्ब इज बताता है कि नहीं मैम ये तो अभी भी प्रेजेंट टेंस में है. सी, ही डिड इट, डिड इज वी यूज व्हेन वी आर यूजिंग पास्ट टेंस. तो अगर आपका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में है, देन पैसिव वॉइस में भी आपको उसको पास्ट में ही रखना होगा. इट वॉज डन बाय हिम. डोंट गेट कन्फ्यूज विद द वर्ड टीच बिकम्स टॉट. जैसे मैंने बोला था कि आई टीच इंग्लिश, है ना, रिमेंबर इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस आई टीच इंग्लिश. सो टीच इज व्हाट? ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड कि नो मैम द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस. When I was converting that to past passive voice, what am I going to write? English is taught by me. तो ये जो is है वो बताएगा कि नहीं मैम ये तो अभी भी present tense में ही है. Alright, so this was our second rule. Tense remains unchanged. Third is V3 form of the verb, and some of the form of the verb to be will be used while using by. Now understand, always we use V3 form. कैसे हो जा रहा है? इंग्लिश इज टॉट बाई मी. टीच क्या हो गया? टॉट हो गया. सिंग क्या हो गया? संग हो गया, नॉट सैंग. सैंग इज अगेन द V2 फॉर्म. संग बाई मी. ऑलराइट. फूड इज कुक्ड बाई मी. कुक्ड यहाँ पे V2 फॉर्म है? नो मैम, कुक्ड यहाँ पे V3 फॉर्म. Alright, now pronouns like somebody, anybody, they, etc. are used in passive form if the subject is not mentioned. Remember I told you what is the use of passive voice? When the subject is unknown to us. Okay, suppose if my sentence is he was called, उसको बुलाया गया था. Now कौन बुला रहा है उसको? किसने बुलाया? जो एक्शन कर रहा है बुलाने का, that is unknown, the subject is unknown. So when we write that in passive form, he was called by someone, किसी के द्वारा बुलाया गया था. ओके, द पार्सल वॉज डिलीवर्ड. द पार्सल वॉज डिलीवर्ड बाय, और समवन डिलीवर्ड द पार्सल. राइट, यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम हो रहा है. तो व्हाट डू वी सी व्हेन द सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड? वी कैन यूज somebody, anybody or they, depending upon the type of sentences you have. Alright, last is pronouns of active voice takes up the objective form when converted to passive voice. The very first rule which I said कि first sentence में active voice में वो subject है, but जब convert करेंगे into passive voice तो वो क्या हो जाएगा? Object बन जाएगा. Clear? तो ये बस 5 रूल है बेसिक, इसको ध्यान में रखना है. Now let's talk about कि हर टाइप के टेंस में किस किस तरह से चेंज होता है अपना active to passive. Okay, suppose see here, simple present tense. I play football. What is my subject here? I is my subject here. I is my subject. Play is my verb. Football is my object. What was my first rule? Change in position. Position change करने का रूल था. तो क्या हो गया? फुटबॉल जो लास्ट में था, फुटबॉल आगे आ गया. I जो आगे था वो क्या चला जाएगा? पीछे. बट आर वी गोइंग टू यूज आई डायरेक्टली? नो. वाई? बिकॉज नाउ हियर इट इज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्टिव केस, राइट? सो इट विल बी कन्वर्टेड टू मी. नाउ ये कन्वर्जन आई से मी, ही टू हिम, ये सब प्रोनाउंस में आता है. अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ अगर कहीं से भी कन्फ्यूजन है, मैम आई डोंट नो हाउ टू कन्वर्ट, or I don't know what is going to be the subjective case, what is going to be objective case, comment down below. I'll give you a very short crisp video on the pronoun. Okay, and then I play football, क्योंकि ये present tense है तो क्या होगा? क्या बोला गया था? एक helping verb भी आता है. football is, played is again, play का ये V1 form है, that has to be converted to which form? To V3 form.
फुटबॉल इज प्लेड बाय मी, मेरे द्वारा खेला जाता है. ऑलराइट. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम लर्निंग ग्रामर, मैं ग्रामर सीख रही हूँ. इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. अगेन फर्स्ट रूल, पोजिशन, ग्रामर जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इट इज़ गोइंग टू बी द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, ग्रामर लिख दिया. आई जो सब्जेक्ट है उसको लास्ट में लिख दो मी. इतना समझ में आ गया. नाउ आई एम लर्निंग, ये तो कंटिन्यूस, ये तो प्रेजेंट टेंस हुआ मैम, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा. ओके. नाउ ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर यू हैव कंटिन्यूस फॉर्म, जब भी तुम्हारे वर्ब में इफ यू हैव आई एन जी फॉर्म, what are you going to replace it with? Being. Grammar is being. Now learn ka V3 form is learnt, learnt by me. Grammar is being learnt by me. Yes, so if I give you a sentence, I am writing a letter, वो क्या हो जाएगा? A letter is being written by me. Okay, now taking a perfect tense, I have eaten a burger. Now यहाँ पे याद रखोगे, जब ing फॉर्म होगा वी ing होगा तो being हो जाएगा. जब आपका परफेक्ट फॉर्म होता है देन वी यूज बीन. ओके. अ बर्गर हैज़ बीन ईटन बाय मी. ओके. अ बर्गर हैज़ बीन ईटन बाय मी. एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है. सपोज यहाँ पे आई हैव गिवन यू अ सेंटेंस अ बर्गर, सिंगुलर नाउन है, दैट इज वाई आई हैव यूज्ड हैज़. बट इफ द सेंटेंस हैड बीन आई हैव रिटन लेटर्स, ओके, आई हैव रिटन मैनी लेटर्स, प्लूरल हो गया तो क्या हो जाएगा, मैनी लेटर्स हैव बीन रिटन बाय मी. तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, व्हेन टू यूज हैज़, व्हेन टू यूज हैव, बिकॉज दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन दिस वेदर दिस इज सिंगुलर और प्लूरल इन नंबर. क्लियर है. नाउ पास्ट अगर हो गया, ही बॉट अ कार, नाउ बिकॉज इट इज पास्ट टेंस, it this is with instead of is, what are we going to write? Was. A car was bought by him. He was singing a song was being sung by him. ओके. एक बार आप प्रेजेंट टेंस अगर ध्यान में ले आओ तो आगे का काम आसान हो जाता है. ओके. He was singing a song was being sung by him. Okay. Now past perfect. Jay had finished his work. Now again I told you, had जब भी होगा या perfect form में आपका has, have, had कुछ भी हो, that will be replaced by been. Okay, not exactly replaced but addition हो जाता है been का, तो क्या हो जाएगा, his work had been finished by him और by Jay, whatever you feel like. इतना तक समझ में आ रहा है. नाउ फ्यूचर में आ जाओ. सिंपल फ्यूचर, शी विल एक्सेप्ट द ऑर्डर. विल है तो समझ में आ जा रहा है, ओके मैम ये तो फ्यूचर टेंस होगा. नाउ द ऑर्डर इज माई ऑब्जेक्ट हियर, विल बी पोजिशन्ड हियर. द ऑर्डर विल बी accepted by her. Accepted here is what? Not past tense but my V3 form. Okay, the order will be accepted by her. I will have changed the battery. Future perfect है, will have. Okay, perfect है उसकी वजह से we have used have. The battery will have been changed by me. Alright, have been use करना होगा. Now एक चीज़ का बस आप ध्यान रखोगे कि जब when we were taking up the rules, यहाँ पे I had said where is it? Yes, यहाँ पे स्ट्रक्चर में की जब बात हो रही थी, then I had written by and with, okay, but I haven't given any such example. तो आप यहाँ पर बस ये समझ लो कि whenever you have by, जब भी when we are talking about a person as an agent, ठीक है, जैसे कि I delivered the letter, the letter was delivered by me. Okay, but here if I am using an instrument, जैसे suppose Ram hit the dog with a stick. Okay, तो जब इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, कोई एजेंसी जो है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, नॉन लिविंग थिंग है, तब हम लोग विथ यूज करते हैं. ये आप समझ लो. ओके, व्हेन एक्चुअली ये प्रेपोजिशन है तो इट्स प्रीटी अंडरस्टैंडेबल, बट स्टिल इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर यू to know this. All right, so this was it about like a very simple crisp video on active passive, not a very short video, thoda sa lengthy ho gaya, but this was important.
So I would request you all to kindly go through all the rules, okay, especially this chart of active voice and passive voice and conversion and other things. Now, this is not just the topic. कई बार conversions आता है कि suppose you have interrogative sentence, if you have like imperative sentence, उसका passive form क्या होगा. So I thought of making a separate video on that. So if you want to make me to make that video, so kindly do comment that also. And if you like the video, give it a like and kindly share it with others. Thank you so much.